Good morning, everyone. Our today's poem is At the Back of the Progress, written by Taslima Nasrin. So let's begin. First, understand who Taslima Nasrin was. So, Taslima Nasrin is a prominent Bangladeshi author. She's a feminist human rights activist, and she's born in Bangladesh. And then some of the major key points about Taslima Nasreen was that she gained the widespread attention by her novel Lajja. Then she has a very prominent feminist voice. She advocates women rights. She's a very strong feminist. She has been attached with various controversies and threats because of her outspoken approach in her poetry. She got various international awards also. Themes of her writing has been religious intolerance, human right violation, gender inequality, struggle for individual freedom, then challenges often oppressive social norms and call for an inclusive and tolerant society. So that's a major themes. Then there was a controversy related to, she was exiled from Bangladesh, then she was asked to come. So that's controversy keeps on going. Then she has also applied for multiple nationalism. She has tried to be at multiple places because of the controversy that was happening, but that's not so important. The thing that is important for us to understand, she's a Bangladeshi author. She's a very prominent feminist voice. Because of her feminism, feminist approach, outspoken approach, bold approach, she has been into controversies, but she has done it with so religiously. She has spoken for human rights, women rights so religiously that she is widespread and known in the field of literature. Clear? So that's about Taslima Nasreen. Now let's see the poem that is prescribed in our syllabus. We'll go to that poem. So here the poem is At the Back of the Progress. Very title of this poem कि प्रोग्रेस के पीछे क्या क्या होता है. सो वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहां पे हम हर रोज प्रोग्रेस का क्लेम करते हैं. वी आर डेवलपिंग इनटू स्मार्ट सिटीज, वी आर डेवलपिंग इनटू मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम आ गए हैं. देयर इज डेवलपमेंट, देयर इज अ टेक्नोलॉजी एंड सो मेनी थिंग्स. प्रोग्रेस इज हैपनिंग, बट तस्लीमा नसरीन वांट्स अस टू फोकस कि इसके पीछे ये जो ग्लोमी, ये जो हमारी ग्लोरीफाइड पिक्चर है, ये जो गोल्डन पिक्चर है हमारी सोसाइटी की, इसके पीछे क्या क्या होता है. तो इन दिस पोएम हमारे को टाइटल से ही समझ में आ जा रहा है कि जो गोल्डन पिक्चर है उसके पीछे की जो सच्चाई है वो ये हमारे सामने लाने की कोशिश कर रही है. सो लेट्स स्टार्ट. The fellow who sits in the air-conditioned office is the one who is in his youth raped a dozen or so young girls and at cocktail party is secretly stricken with lust, fastening his eyes on Lovely's belly button. So we are introduced to a character. Okay, we are introduced to the character. सबसे पहले हमें एक character को introduce किया गया है who sits in an air conditioned office, which implies कि अच्छी position पे है, powerful position पे है. Clear? So एक बंदा है वो powerful position पे है, but at the back what he has done, जो एक powerful position पे है, power hold करता है, उसने अपने youth में he has done heinous crimes. He has raped, and even into the right now also, past maybe he has a heinous past, and then present maybe he has that lust, he's still carrying that lust, he's looking at women with objectifying lens, and he's doing all the stuff. Clear? In five-star hotels he tries out his different sexual taste with a variety of women, then returns home and beats his wife because of an over ironed handkerchief or shirt collar. So उस कैरेक्टर की लाइफ को बताया गया है कि पावरफुल पोजीशन में है, उसका पास्ट इस तरीके से रहा है, इसकी अपब्रिंगिंग पास्ट का इफेक्ट ये रहा है, प्रेजेंट में भी इज डूइंग द सेम. देन 5 स्टार होटल्स में वो जाता है, अभी भी वो अपने सेक्सुअल परस्यूट के पीछे भाग रहा है, एंड देन फाइनली व्हेन ही कम्स होम ही बीट्स हिज वाइफ. सो एक बहुत ही
डिस्टर्बिंग पिक्चर है ये, बट दैट्स व्हाट द रियलिटी दैट शी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे, कि पीपल एट द पावर, they have everything, they have power, but at the back of that, these things are happening, these things are very common. Sexual abuse is happening, misogyny is happening, wife beating is happening, domestic violence is happening. And who all are doing that? Though यहाँ पे एक person की बात है, but ये एक person is representing the class of वॉयलेंस जो कर रहे हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके ऊपर एक कमेंट्री दी गई है. एंड देन फाइनली वी कम एंड शिफ्ट टू द नेक्स्ट सीन. In his office, Mr. Big puffs on a cigarette, shuffles through files, rings for his employees, shouts, demands tea, drinks, and returns to writing people's character references. Then we shift to the scene of the office. Mr. Big बोला गया है उनको. मिस्टर बिग सिगरेट होल्ड करते हैं, फाइल्स करते हैं, एम्प्लॉयज को डांटते हैं, एंड देन फाइनली he is the person who himself doesn't has a character. He is in a position who writes people's character references. What he is doing, he is giving character certificate to people. So that's the irony, that's the you know contrast that the poem is trying to show to us. कि एक character है who is representing the class of such type of people, powerful position में है, उनका जो role है real life में versus home and outside. It is very disturbing, but still he is in a power that he writes character certificate. Clear? Then in the next stanza, the focus shifts from boss to employees. So now आपको ये बताया जा रहा है कि सिर्फ boss का ही नहीं, आप देखते हैं एम्प्लॉय कैसे हैं वहां के, जो वहां पे काम कर रहे हैं. His employees speak in such a low voice that no one would ever suspect how at home he also raises his voice, is wild to his family, but with his buddies on the porch or at movies, indulges loud hangers on politics, art, literature, and how some female, his mother, grandmother, or great mother, committed suicide. सो नाउ द फोकस इज शिफ्टेड टू एम्प्लॉयज, कि वहां पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको देख के आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो उतना धीरे बोलते हैं ऑफिस में, कि घर में वो भी जाके दे आर शाउटिंग एट देयर वाइव्स, एंड देन दे आर इंडल्जिंग इन parties and all that stuff, and into a conversation which is very demeaning to women. They are talking about things, art, literature and all that stuff, but finally they come to कैसे इस वुमेन ने सुसाइड किया एंड ऑल दैट. सो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि सिर्फ बॉस लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरी की पूरी पेट्रार्कल माइंडसेट के ऊपर अटैक किया जा रहा है. वेदर दे आर बॉस, वेदर दे आर एट एम्प्लॉय लेवल, these things are very common. Objectification of women, not understanding women, demeaning women, subjugation of women is very common at every level of the society. That's what the poet is pointing towards. Then finally, next stanza, bidding goodbye to his buddies, he returns home, beats his wife over a bar of soap or baby pneumonia. Clear? So now again he goes back, does the same things, beats wife. So violence, domestic violence is again and again repeated in the different contexts. Then finally, we come to the next scene, next stanza. Next day at work, he pleasantly brings the tea, keeps the lighter in his pocket, receive a tip of couple of taka, tells no one that he divorced his first wife for a sterility, his second for giving birth to a daughter, his third for not giving a sufficient dowry. Now with wife number 4, he again has someone to beat over a green chili or a handful of rice. So now we again shift to the boss, and we are told how he has done all that stuff, and he's उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में आपको बताया गया है कि वो जाता है, कूल एटीट्यूड में है, एंड देन he has told no one, what he has told no one, that he divorced his first wife for sterility, कि उसकी लाइफ में कितनी वुमेन रही है और उसने वुमेन के साथ क्या क्या किया है. तो फर्स्ट वाइफ को उसने इनफर्टिलिटी की वजह से डिवोर्स कर दिया, सेकंड को बर्थ डॉटर को देने की वजह से कर दिया. So many issues, feticide issues, not being able to give birth,
not giving a sufficient dowry ka topic. And now with wife number 4, he again has someone to beat over a green chili and handful of rice. So fourth wife hai uski, and fourth wife ke साथ भी he is doing the domestic abuse and violence. So that's how the poem ends. So बहुत ही unusual सी poem है, ऐसे चमाटा लगाने वाली पोयम है, दैट हम प्रोग्रेस के नाम पे हम बहुत ग्लोमी रोजी पिक्चर को इमेजिन करते हैं कि हम बहुत डेवलप हो रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, वुमेन आर कमिंग एट फ्रंट डूइंग थिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ. बट इस पोयम में उसके पीछे का जो सच है कि आज भी हमारी सोसाइटी की ये रियलिटी है, डोमेस्टिक वायलेंस एंड देन मिसोगिनी, subjugation of women. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब छुप के हो रहा है. At the face we are claiming that we are all modern, we are all feminist, we are all trying to proposing women empowerment, but the end at the home actually अभी भी पावर के नाम पे, पावर के पीछे वुमेन का सब्जुगेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है वुमेन के पीछे. एंड ये पोयम हमें वो स्टार्क पिक्चर, वो जो छुपी हुई पिक्चर है, वो दिखाने की कोशिश कर रही है. देन बॉस के लेवल पे, एम्प्लॉय के लेवल पे, इन शॉर्ट इट इज प्रेवलेंट एवरीवेयर, ये बताने की कोशिश कर रही है. आई होप ये पोयम आपको समझ में आई होगी, ये पोयम आपके दिल पे लगी होगी, इसने आपको सोचने पे मजबूर किया होगा. So now let's move further and see little more in detail some critical aspect. So if we just conclude what all we have read, and let's understand with the major themes and major aspect of the poem. So here, first and foremost thing that we have understood, theme of abuse and hypocrisy hai. हिपोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि हम दिखा क्या रहे हैं and हो क्या रहा है. The primary theme of poem revolves around abuse and hypocrisy. Character who holds a position of power, influence, but there's a dark past that he is hiding. Sexual violence का है. Character's double life, that's the double life that we are leading. बाहर से हम कुछ और हैं, अंदर से हम कुछ और हैं. Respectable image in the public, but violent, oppressive behavior towards women in the personal life. That's very more important. That's why back of the progress, कि हम दिखा कुछ रहे हैं और अंदर से हम कुछ और हैं. This theme underscores the prevalence of abuse and stark contrast between public image and private reality. So that's the major thing, that what a public image human beings are carrying and what a private reality they are having. Then there's misogyny and objectification of women. Characters misogynic tendency we see, objectifying women's है. जब वो उसको देख रहा है स्टार्टिंग की लाइंस में, बेली बटन वाला जो सेंटेंस है आपका, डीप रूटेड लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन. सो वहां पे ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर के बहुत सारे रेफरेंसेस हमें मिलते हैं. डायकोटमी एंड पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, ये हमने अभी किया कि पावरफुल पोजीशन है, एयर कंडीशन ऑफिस है, सक्सेस है, बट एट द बैक डोर क्या हो रहा है. ठीक है, नेचर ऑफ अपीयरेंसेस की बात हो रही है. देन सटायर है, आयरनी एंड सटायर हमें मिलता है, क्योंकि वही डबल स्टैंडर्ड की वजह से कि हम दिखा कुछ रहे हैं. वी आर राइटिंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ही इज राइटिंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंड हिज कैरेक्टर हिमसेल्फ इज इन सच बैड कंडीशन, ही डजंट हैव अ कैरेक्टर. सोशल क्रिटिक है, it's a very powerful social critique of prevalence of violence and abuse toward women. It highlights need for awareness and accountability in addressing these issues. Then structure and imagery, we find there's so many things, actions के through हमें images create किए गए हैं. Repetition है, बार बार character के abusive behavior को, wife beating का reference बार बार है, बहुत सारे रेफरेंसेस बार बार हैं, जो साइक्लिक नेचर बता रहा है, जो ये बता रहा है कि कितना प्रिवलेंट है, कितनी फ्रीक्वेंटली ये चीजें हो रही है हमारी सोसाइटी में. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनिवर्सलिटी ऑफ थीम. हालांकि पोएट हैज चूजन अ कैरेक्टर, मिस्टर बिग जो वो कह रही है, कुछ एम्प्लॉयज, बट इट इज एक्चुअली addressing to all the characters, all the people in the society. It's addressing to all of them. So while the poem may describe specific characters and situation, its theme of abuse, hypocrisy, and misogyny resonates on a broader level. It draws attention to social society,
societal issues that transcend geographical and cultural boundaries. So ये एक दो लोगों की बात नहीं, ये एक पूरी सोसाइटी का आईना है. So that's universality is important as a theme that we see. And finally, we come to the conclude, and there's a conclusion is that it is a compelling and thought-provoking poem that addresses crucial issues of abuse, hypocrisy, and misogyny. Through its powerful use of language, irony, and vivid imagery, the poem suffers a scathing critique of individuals who abuse their power and influence while projecting a false image of respectability. It calls for introspection and collective action. मतलब इंट्रोस्पेक्शन के लिए ये पोएम हमें प्रॉम्प्ट कर रही है कि यू नीड टू थिंक, आपको सोचने पे मजबूर करेगी ये पोएम. एंड दूसरी चीज जो ये पोएम आपको करने पे मजबूर करेगी, वी नीड टू टेक कलेक्टिव एक्शन. इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इंडिविजुअल लेवल पे नहीं निकाला जा सकता. वी नीड टू come together as a society. Women need to come together. Whole society need to come together to challenge and dismantle the structure that enables such toxic behavior within society. जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो टॉक्सिक बिहेवियर प्रिवेलेंट है, उसको तोड़ने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए, ये जो बैक पे हो रहा है, एट द बैक ऑफ द प्रोग्रेस हो रहा है, पावर के पीछे हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड में हो रहा है, हिपोक्रेसी के थ्रू हो रहा है, उसको सामने लाना पड़ेगा. और उस पैटर्न को तोड़ने के लिए ऑल ऑफ हैव टू कम टुगेदर. हम सबको साथ में आना पड़ेगा. all of have to come together and do something towards it. So वो वाली चीज जो है वो पोयम आपको समझाने की कोशिश कर रही है. So that's the final thing. It calls for introspection and collective action to challenge and dismantle the structures that enable such toxic behavior within society. I hope ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी. इस पोएम ने आपको सोचने पे मजबूर किया होगा. आप अपने आसपास की सोसाइटी में यदि ऐसा कुछ हो रहा है, वो चीज ऑब्जर्व या रिफ्लेक्ट कर पाने की कंडीशन में ये पोएम आपको लेके आई होगी. So with this, we have come to the end. Stay with this disturbance जो इस पोएम ने आपके अंदर क्रिएट किया है, and try to bring together at your individual level, at collective level, to work towards these issues. With this, we have come to the end to our discussion. Bye bye.